Hello, Assalamu alaikum. Am I audible? Hello, am I audible?
Okay, Assalamu alaikum. Can you all hear me? सबको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है? अभी दफा चैट बॉक्स पर yes or no का जवाब दे दें. It would mean a lot that if I know it, I am audible and we can start. Okay, so if I am clear, then I'm going to go ahead with this. ठीक है. तो अस्सलाम वालेकुम और गुड इवनिंग सबको. मेरा नाम है हफ्सा शहजादा. By profession, I am a psychologist, and yeah, just 1 minute, everyone, please. 1 minute मुझे दे दें. रियली सॉरी सबको. दरअसल मैं खुद मदर हूँ, तो बस मेरी मदर की ड्यूटीज भी होती हैं करने को साथ साथ. सो एनीवे, गोइंग बैक टू टुडे सेशन. माय प्रोफेशन में हूँ एक साइकोलॉजिस्ट, एंड मेरी स्पेशलाइजेशन है क्लिनिकल साइकोलॉजी में. Beside that, I work as a freelancer and in research and content. So ये सेशन मैंने बेसिकली ये टॉपिक पर किया है, women and substance use, and the main focus is on Muslim communities. इसलिए मैंने ये टॉपिक रखी है, from silence to strength, women, substance use and the unseen battle for healing in Muslim communities. अब आई गेस आप सब लोगों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि हमारा अभी तक जो भी सेशंस हुए हुए हैं इसमें औरतों का किरदार इतना ज्यादा, मतलब we have talked about women, we talked about men, we talked about children, we talked about youth, के सबको ड्रग्स, सब्सटेंस यूज और किस तरह से इन सब क्या कहते हैं चीज़ों से सर से लोग मुतासर होते हैं इन टूडेज कम्युनिटी. हमने इस्लाम पर फोकस किया है, हमने एक सेल्फ जो हमारा नफ्स होता है उस पर फोकस किया है. सो आई वुड लाइक टू फोकस ऑन women only over here, but women in the sense of every role that they carry on their shoulders, not just as एक औरत के तौर पर, औरत के तौर पर सिर्फ नहीं, एक बच्ची के तौर पर, एक लड़की के तौर पर, एक मैरिड वुमन के तौर पर, एक मदर के तौर पर. जो हमारे इतने सारे रोल्स होते हैं that we carry on our you know in our lives all the time. So I want to dig deep on this. This is why I chose this as my topic, how we are battling stigma, withdrawal, and recovery while navigating social roles, Islamic identity, and familial responsibility. जो जिम्मेदारियां हम अपनाते हैं अपने shoulders पर. So, with that said, I would like to move on to how दिस टॉट मैटर्स. क्यों ये टॉपिक इतनी जरूरी है, इस पर बात करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है. एडिक्शन इटसेल्फ एक मेल प्रॉब्लम के तौर पर फ्रेम की गई है कि ये सिर्फ मर्दों को अफेक्ट करती है, सिर्फ एक मैन है जो इस प्रॉब्लम से मुतासर होता है. बट दैट्स नॉट ट्रू. women actually were always in the picture, they were never absent. लेकिन क्योंकि ये टॉपिक लार्जली सोसाइटी में मेन स्ट्रीम जब भी हुई है, तो men were the ones who were highlighted, boys were the ones who were highlighted, women were always in the shadows. मैं एक स्टेटिस्टिक्स इस यहाँ पर मेंशन करना चाहती हूँ कि 1 in 3 people who use drugs globally are women. आप 3 लोगों में से आप देखें कि 3 लोग ड्रग्स ड्रग अब्यूज से मुतासर हो रहे हैं, तो उनमें से एक औरत हुई थी जो ड्रग अब्यूज से मुतासर हुई है. दैट सेड,
why are women suggested so much not portrayed in the mainstream media? Today, ये details पर पर्दा डाला जाता है. ये details underground, or how you can say it's in the shadows by prohibition and stigma. यहाँ पर फौरन एक image आ जाती है या एक जवाब दिया जाता है कि खवातीन ड्रग्स यूज करते हैं, ये जरूर एक बुरी औरत होगी. She is not a good woman. She is not a morally righteous woman at all. तो ये कल्चरली एक इसमें स्टिग्मा है, इसमें एक लेबल लग जाता है. और प्रोहिबिशन रिलीजियसली भी देखा जाता है कि women are supposed to be very strong in their ईमान, they're supposed to be very strong in their क्या कहते हैं थॉट्स, in their feelings, इमोशनल हैं. तो जाहिर बात है फिर अगर वो ड्रग्स भी यूज करे तो उनका किरदार भी बुरा ही होगा. दैट सेड, ये चीजें, ये स्टेटिस्टिक्स, ये डिटेल्स, इन पर पर्दा डाल जाता है. जिस तरह से लिखा हुआ है, मोस्ट कंसील्ड इट इज हिडन. So that's why this category of Muslim women, they occupy the least visible corner of all in terms of all overall general global statistics of drug abuse. when Muslim women की जो details हैं, जो इनके statistics हैं, जो इनके stories हैं, इन पर पता चला जाता है. इतना openly नुमाया नहीं किया जाता society में, global foreign countries में भी. They never brought it to the limelight. Moving on, माई सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ओवर हियर, जो मेरा एक मेन कोर यहाँ पर डिबेट है, कि अपने आप को हील करना, इट डज नॉट रिक्वायर चूजिंग बिटवीन फेथ एंड रिकवरी. अपने ईमान और अपनी जो एक रिकवरी है, जो अपने शफा या भी जो होती है, इस दोनों तो, इन दोनों में से आप तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए. जो अब तो यहाँ पर डिसीजन नहीं लेनी चाहिए. इस्लाम में कॉन्सेप्ट हैं तौबा, रिपेंटेंस, ठीक है, अपने गुनाह के लिए माफी मांगना, mercy, रहमदिली, community are overwhelmed or like woven together into trauma-informed, confidential, gender-sensitive care. ठीक है, कि जब इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स ये होते हैं कि तौबा करना, एक रहमदिली अपनाना, और सोसाइटी में सबके साथ एक बराबरी के साथ रहना, सबके साथ, ठीक है. तो इसको हम लोग क्यों नहीं साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ट्रॉमा अवेयरनेस, कॉन्फिडेंशियलिटी, मतलब कि सबके सीक्रेट्स अपने साथ रखना, और जेंडर सेंसिटिविटी के साथ उनका ख्याल रखना, उनको केयर देना, ये चीजें अगर कॉम्बिनेशन में लिया जाए तो ये ईमान के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होती है. इट बिकम्स द ब्रिज फ्रॉम साइलेंस टू स्ट्रेंथ. खामोशी से एक वापस ताकत अपना अपनाना, हिम्मत दोबारा गेन करना. दिस इज व्हाट द मेन कोर आर्ग्यूमेंट इज, कि आप दोनों को साथ लेकर जा सकते हैं. एक अपनी सेहत को, एक शिफा गेन करना, और अपने ईमान को भी, ठीक है. So we should not be divided in between these two things. Moving on, कुछ realities हैं जो एक रोड मैप में मैं चाह रही थी हम डिस्कस करें. So the first thing is the hidden epidemiology, why women's use stays unseen. I believe the women's use, it stays unseen because not a lot of, like I said, statistics are available in the mainstream media. People don't, not sorry, not people, I would interpret myself over here. Women don't come out and report about themselves being involved in drug, uh, any sort of substance use, be it alcoholism, be it medications, be it overdosing. Maybe it can either be well, substance use can be in all sorts of things, maybe even cigarette use, maybe it can be cocaine, it can be cannabis, it will be heroin, whatsoever. There are multiple forms of drugs, and or even ice. I have a lot of I remember my university days, but lots of colleagues of mine who not openly in our university campus, but off campus when they were with their peers, they used to be engaged in a bit of general social smoking. Yeah. So again, I'm saying these are realities, not just men or boys go through it, women go through it as well, girls go through it. And there are loads of reasons for it. It's a foreign label लगाना कि ये ऐसी औरत है या ये ऐसी लड़की है. That's not the way to go. That brings me to the second point, the architecture of stigma, the stigma, ये label.
ये एक फॉरेन स्टेटमेंट बता दिया कि ये अच्छी लड़की नहीं है, इसके साथ आपने इंटरेक्शन नहीं रखना, इनके कंपनी में बैठना नहीं है, वो अपनी बुरी हैबिट्स आपके ऊपर डाल देंगे। That's the exact reason why women, why girls experience shame. उन्हें शर्म आती है उनको अपने इज्जत पर कोई हमारे इज्जत पर हाथ ना उठाए, उंगली ना उठाए। और फिर this is the reason why they go towards silence, खामोशी अपना लेते हैं। If you're going to answer to them, we are just going to be exactly what they describe us as. Everyone always listens to the stronger authority figure in the room. And men, unfortunately, as many of you have seen, a patriarchal society में हम जो रहते हैं, they are the authority figures and they are given the importance in any room. That said, the body and mind under siege, when you are actively consuming any sort of substance, be it alcohol, be it medications, be it hash, cannabis, whatsoever. So you will be experiencing these symptoms of withdrawal, of trauma, of comorbidity. You are going to be very much vulnerable to all sorts of illnesses and diseases. Uh, हार्ट डिजीज के हो जाते हैं, मरीज हो जाते हैं आप, लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, all sorts of illnesses are making you a victim of both the body and the mind. You are losing your focus, your concentration. You are not being present in the moment. You are zoning out. This is where आपके body, आपके mind दोनों एक single substance के क्या कहते हैं, बिल्कुल एक victim हो जाते हैं. With that said, faith as both wound and balm. आपकी ईमान आपके लिए एक, आपकी जो तकलीफ है, आपकी जो चोट है, उस पर एक आपके लिए हीलिंग एजेंट बन सकती है। एट द सेम टाइम आपकी आइडेंटिटी भी एट रिस्क होती है। योर आइडेंटिटी इज ट्राइंग टू रिकवर फ्रॉम द फैक्ट कि ओके, मैंने अभी एक बहुत ही हैवी चीज कंज्यूम की है, एंड I don't know, am I a good woman in terms of my religion, or am I making a really huge sin? क्या मैं बहुत बड़ा गुनाह कर रही हूँ कि मैंने वो चीज की है जो पूरी सोसाइटी में इतनी बड़ी लेबल के साथ उसे देखा जाता है? So you are trying to understand where do you lie both as a human being, as a person, as well as in terms of your identity in Islam. Pathways to healing. Again, gender responsiveness to your actions, to your beliefs, to your feelings. That is very important when you, as a factor that you consider when you are in the field. How the culture is viewing you, what is your iman saying about you, describing you. So you have to look for ways of recovery, both as a woman, both in terms of your culture and both in terms of your iman. कि मैं एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स को लेके अपने आप को बेहतर कैसे कर सकती हूँ, मैं सिर्फ एक पाथ नहीं डिसाइड कर सकती। हियर वी नॉट टॉकिंग अबाउट समवन जो 5 वक्त नमाजी है, या जो सॉरी a person who is wearing a hijab, or the one who chooses to wear dupatta or not, or however the dressing is, however that woman is like in terms of her behavior towards other people, बहुत social है, बहुत extroverted है या बहुत introverted है, so बहुत बड़ा social circle है, या फिर वो prefer रहती है अपनी family के साथ ज़्यादा reserved रहे. All of these things are factors which are part of your healing, which are part of your support circle to help you towards getting better. Moving on. Now, the background behind this whole problem is that this problem is always measured around men. Substance use disorder historically is framed around men, क्योंकि ये आदमियों के इर्द गिर्द ये प्रॉब्लम हमेशा रिवॉल्व होती है कि men heavy drinkers होते हैं, men heavy substance use consume करते हैं, like hash, cannabis, alcoholism, whatsoever. Women की आइडेंटिटी टिपिकली उनके केयर गिवन रोल से आइडेंटिफाई होती है. Like they are, like I said before, there are so many social roles. We are actually born into so many social roles. The moment a girl is born, she is एक किसी की बेटी होती है, right? At the same time, जब उसका sibling होता है तो वो किसी की बहन भी होती है. Moving on, फिर
और रोल्स आते हैं, जैसे कि सहेली होती है, फिर जैसे कि एक दिन बीवी बन जाती है, फिर माँ बन जाती है, एंड द रोल रोज, जैसे कि बहू होती है, देन द रोल रोज ऑन। सो ये रोटेटिव रोल इट हमेशा एक वुमन पर ही आता है। शी इज द नर्चरर ऑफ द होम, शी इज द one who is controlling the emotional stability of a household. So unka role as the main protagonist or the main how should I say this, the main character of any story वो नहीं देखी जाती, उसकी side character वाली story होती है through her tear given responsibilities. So your thought doesn't go over there. Your thought goes towards the men, the main person who's holding the household together, who's going outside her दिन to earn a living, जो दुनिया से धक्के फेस कर रहा होता है, अपने shoulders पर इतनी चीजों का बोझ कैरी करता है, जो खामोशी से हर चीज सह रहा होता है। तो your focus is on that, on the men, on the boys, but not on the women, which is why they are shadowed, they are not given the importance that they deserve. इसके साथ साथ मैं मेंशन करना चाहूंगी, ग्लोबली 1/3 of drug users and tens of millions with alcohol use disorder are women. That's a huge number कि 1/3 के ड्रग कंज्यूमर्स और टेंस ऑफ मिलियंस की औरतें यहाँ पर जो और क्या कहते हैं, जो अल्कोहल कंज्यूम करती है, हेवी ड्रिंकर्स हैं. In fact, there was, I remember a report I read, okay, during maternity, जब women expect कर रही होती है बेबी तो उस दौरान भी heavily discourage किया जाता है कि आप ड्रिंक करें, क्योंकि बेबी की जो प्रीनेटल ग्रोथ है, जो उसकी मदर के वूम में डेवलपमेंट हो रही है, was highly impacted from the consumption of alcohol. और बहुत सारे इसमें आगे जाके diseases, milestone delay, these type of things impact hoti on the baby when he or she is born because of the mother consuming alcohol or smoking or any other drugs during her prenatal time. So ये चीजें again severity जाती है when a mother is expecting, because she has of course a high level of hormonal imbalance, a high level of ups and downs in her health, बट अगेन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, तो इसलिए वो फिर इन चीजों की तरफ जाती है. Muslim communities mean the true scale is almost impossible to measure. Once again, I'm talking about the fact that women in Muslim communities do not come forward and report themselves as drug users. रिहेबिलिटेशन सेंटर्स या किसी की या मस्जिद में जाके औरतें जाकर बताएं किसी को, अपने शेयर करें सीक्रेट कि मैं इन चीज़ों में मैं ये चीज़ कंज्यूम करती हूँ, मैं बहुत ही दुखी होती हूँ तो मैं थोड़ा सा 2 दफ़ा स्मोक कर लेती हूँ, या मैं वेप कर रही होती हूँ. You do not hear such type of things. So once again, the stigma, the expectation, the responsibilities placed on a woman's shoulder are so many that they do not come forward and share their difficulties. तो इसलिए सारी ये रिपोर्टेड फिगर जो मैं बता रही हूँ, इतना 1/3 और ये सारे जो अमाउंट और नंबर स्टेटिस्टिक्स हैं, ये completely understated है रियलिटी में. With that said, women are the most sincere, like I said before, the problem. You are afraid of dishonoring your family. A woman is afraid of losing her children, चाहे वो 10 साल से छोटे बच्चे हों या 15 साल के हों, whatsoever, your child is a part of you. And अगर अब तो एक खौफ होता है कि मेरे बच्चे कोई मेरे बच्चों से मुझे जुदा ना करे, कोई मेरे बच्चों को कुछ तकलीफ ना पहुंचाए, मेरे एसेंस से मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचे. So she's always afraid कि a part of me is going to be lost if my children are taken away from me. Third, legal consequences. किसी को मालूम हो कि ये मदर शराब पिए, या ये मदर या ये किसी की वाइफ इवन, we talking about two caregiving roles over here, as a wife and as a mother. If society realizes that, तो फिर custody battles हो जाते हैं. वो एक woman के husband, एक बच्चों का फादर फॉरेन एडेड है, ये मेरी वाइफ तो ड्रग्स में बिल्कुल मुब्तला होती है, शी इज नॉट अ गुड मदर, शी इज नॉट अ गुड स्पाउस, आई डोंट कंटिन्यू अ लाइफ विद हर. तो ये कस्टडी बैटल्स और आगे marriage separation, families the people break apart, all of these things happen because all of
but mainly because the woman is cast away as an unfit human being, an unfit mother, an unfit Muslima, all because of the fact that she had difficulties and she is now consuming drugs. Then, distrust of male-led services. You do not trust services just to men lead करते. Males are leading it. They have a huge certain label. They have a way of viewing a woman less as a person and more as, again, this is not in all men, selective men. मैं advance रखना चाहती हूँ इस चीज में. Okay, selective men view women with the patriarchal aspect that she's a caregiver, she's a domestic household caretaker. She should not be involved in drugs at all in any form. And when you go there, you can be harmed and you man can hurt you, not just verbally, physical assault होते हैं. They can misbehave with you, they can keep you they can keep you against your will in a place that you are not feeling safe in. So and so on. या वो अपनी गलत अपनी बात बयाना भी कर सकते हैं. तो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं जो विमेन नहीं ट्रस्ट करती कि हम जाकर रिकवरी या सपोर्ट लें. और फिर ये फाइनल जो चीज हर सोसाइटी में मुस्लिम सोसाइटी में कहा जाती है कि दुआ करें, दुआ करो कि ये मसला ये परेशानी चले जाए. प्रे जस्ट प्रे इट अवे. अल्लाह पाक मालिक है. Obviously, बेशक अल्लाह पाक मालिक है. But prayers are not the only thing that Allah subhanahu wa ta'ala guides us about. He guides us about that you have to tie your camel, मतलब तवक्कुल रखे. At the same time, you have to have faith that he will provide for you. कि वो आपके जो आपने स्टेप लिए उसमें बेहतरी इंशाल्लाह होगी. So those are the reasons that a woman struggles to seek help. So I was hoping that we're talking about this topic today, we would make this unseen battle visible. We will show how stigma is socially constructed, not inherent only to Islam. We would be able to treat the body, the mind, our women's social role, and the spirit together. And we would reframe these concepts and reframe the way women are seen, not as failures, mother as capable of strength. कि हमारे अंदर हिम्मत है. Like I said before, women's use is concealed and gendered. We have to admit कि हमें बहुत कम knowledge है इस चीज के बारे में. प्रोहिबिशन होती है, जेंडर एक्सपेक्टेशंस होती है, इन सब चीजों पर एक पर्दा डाला जाता है. और फिर क्या इसका नतीजा होता है? इट्स नॉट अ क्लियर मैप, वी डोंट हैव अ क्लियर पिक्चर, बट वी ओनली हैव अ सीरीज ऑफ वार्निंग साइंस that women are struggling. Whatever data we do have, they just show us that the fast women will not go for support because of the following for the following reason which I described about earlier. The women, one third of the women who use drugs, they are those who inject, well, with injections, they inject drugs into themselves. Telescoping, women who escalate towards the use of drugs faster, they are able to reach dependence sooner. They are unable to seek help at a later time. एक ईरान में एक स्टडी हुई थी, रिसर्च हुआ था जिसमें दिखाया गया था कि higher comorbidity intense higher comorbidity when you experience you go towards intense stigma. You are afraid of being cast out. Society अब तो बाहर निकाल देती टेडी अब इससे बात नहीं करना, इस इंसान ये सॉरी इस औरत ने अब हमारे साथ मिलना नहीं है, कोई इस कंपनी में बैठेगा नहीं, और वो हमारे मार्केट प्लेसेस हमारे कहीं भी मिलने जुलने वाली जगहों पर मौजूद नहीं होगी. So this is talking about the fact that a woman can move from first use पहला जो इस experience drugs का हुआ है to a crisis faster than a man, and she will be far less likely to be seen, to be screened or referred. से उसे help बहुत less commonly मिलेगी. The main thing stigma, it was the main thing that built a lot of problems for women. The way the women were seen morally, हराम है ये चीज, वो क्रिमिनल है क्योंकि उसने ड्रग्स कंज्यूम किए, फैमिली की इज्जत अब नहीं रही, एक स्ट्रगल उसने किया, और ये पूरा कलेक्टिव शेम उस पूरी फैमिली एक्सपीरियंस ट्रेजेडी. Gender debate, there's a lot more expectation and stricter expectations when women are concerned. Communal denial, वही बात, कोई कम्युनिटी, कौन सी कम्युनिटी होगी जो एक्सेप्ट रही थी हमारे सोसाइटी में, हमारे एरिया में, हमारे टाउन में ड्रग्स का एक प्रॉब्लम है और इसमें मेनली वुमेन होती हैं impacted. It doesn't exist.
You state, हाँ दी दुआओं से बेहतर हो जाता है, दुआ करो, pray it away. No, no, that's not the solution. Fear of the law, उसे एक वुमन को एक खतरा हो रहा, वो खौफ हो रहा उससे, तो मैं पटरी जाऊंगी, और इफ आई टेल द ट्रूथ, डिस्क्लोज करूंगी, तो मुझे पुलिस आके पकड़ेगी, मुझे जेल में डाल देगी, मुझे तभी हेल्प नहीं मिलेगी, और मेरी फैमिली मेरे सपोर्ट में नहीं आएगी. मूविंग ऑन, we're talking about over here solutions. To seek help is to risk everything she holds. A woman is terrified. If I'm going to seek help, I'm going to risk everything. She will be risking her marriage, her children, her standing, her safety. लेकिन खामोशी जो शुरू में लगती है बेहतरीन नतीजा, बेहतरीन हल, it can feel as a rational choice. But the fifth, the actual solution is not to tell women, कि आप बहादुर बनो, be brave. You have to change the community structures. You have to change the policies. You have to honor the fact that a woman needs help. You have to change the way people look at honor and denial. Honor मतलब इज्जत, एक गैरत जो होती है, और डिनायल, एक इनकार करना कि ये प्रॉब्लम है ही नहीं. That makes silence feel safer than healing. You have to make a person see that silence is not the answer. बोलना, जवाब देना, solution की तरफ जाना, बात करना, एक हल निकालना. That is the way how normal healthy societies work. Recovery at the end of the day is biological and emotional. You have to be able to get better both physically as well as emotionally. Withdrawal can be severe, मुश्किल हो सकता है, sometimes medically dangerous. There's a hidden use for it as well, in fact. Women may withdraw alone, they just withdraw unsupervised. कोई उनको आकर सपोर्ट नहीं दे रहा, उनको मालूम भी नहीं हो रहा कि वो इस चीज से गुजर रही थी. Because there's the privacy that protects reputation and endanger a woman's life. At the same time, a higher psychiatric comorbidity, once again, the more drugs you take, the more at risk your body is of other health diseases, including reproductive health risk. Like I mentioned before, in during expectancy, a woman's reproductive whole system is at risk when she has any drugs, consumed in her body. So you have to change the question. The question shifts from why is she so weak? क्यों इतनी कमजोर है वो drugs use कर रही है? To change the way you look at that to something like what pain is she trying to survive? वो क्या तकलीफ से गुजर रही है कि वो survive कर रही है, कि वो उससे निकलना चाहती है? Why is she this way? क्या कुछ किया जा सकता है? This is the way you have to look at a person's problem, a woman's problem. The threats are trap and the supports set free. What are some problems or barriers? The mothers specifically, they are more likely than fathers to lose custody. अगर woman को पता चले इन mother का कि वो drugs use करी, तो foreign legal courts, right, foreign stigma जाता है कि she is not an unfit person, an unfit guardian for her child. It mother foreign guilt में, shame में मुब्तला हो जाती है, and she has a high risk of suicide at that time. A partner substance use and coercive control. It woman के partner कंट्रोलिंग हो सकता है कि क्योंकि आप ड्रग्स में हैं, तो मैं आप पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं डाल सकता, इसलिए मैं आपको हर चीज़ ऑर्डर दे सकता हूँ और आप वही करोगी. यू आर फेयरफुल ऑफ चाइल्ड रिमूवल, कि आपके बच्चे आपसे लेकर चले जाएं कोई. Poor communication from providers. Again, the one who is providing you, who supporting you, will not communicate with you about what is going on, what difficulties are happening in their marriage. Protective factors. However, women have this thing that they can have stronger abstinence. They can stay away from drugs if they have that much strong willpower. Family support goes a long way. If you have your partner, if you have your siblings that have been supporting you, you can do anything. Concern for one's children. वालदा का एक होता है कि मेरे चिल्ड्रन की, मैं अपने बच्चों की इतनी मुझे परेशानी थी, फिक्र है, मैं नहीं इसको अब आगे फर्दर कंटिन्यू करूंगी, मैं अपने आप से रोकूंगी. आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू ड्रग्स. आई एम गोइंग टू ट्राई टू हेल्प माई सेल्फ so I can recover for my own sake and for my children's sake. Lastly, integrated trauma-informed care. This provides a lot of support for women. If you are having a combination of factors helping together to improve your treatment, rather than standard treatment, a combination of चीजों को एक perfect recovery के लिए ले जाया जा सकता है.
faith as a wound when framed purely as sin, faith and silence rather than support. अगर हम लोग अपने ये actions drug consumption को ढूंढना के बजाय एक difficulty एक गलती के तौर पर देखा जाए और इसको ये भी कहा जाए कि ये गलती बेहतर की जा सकती है, हम इस गलती को इसला कर सकते हैं. Why not? Communities can both help and then they can hinder recovery. जो हमारी सोसाइटी है वो हमारी मुश्किल भी बना सकती है, मुश्किलात भी खड़ी कर सकती है और वो हमारे लिए हेल्प भी निकाल सकती है. दे ऑफर स्पिरिचुअलिटी नेटवर्क्स रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू सब्सटेंसेस. वो आप तो सही स्पिरिचुअल सोर्सेज बताते हैं जिससे आप बेहतर हो सकते हैं. जो ये मॉरल वेट है जो आप तो इतना जिम्मेदारी है जो आपके शोल्डर्स पर प्रॉब्लम बन रही है वो आपको जो आप तो अकेलापन तो महसूस करवाती है वो सब निकाल के आप तो बेहतर लेकर जा सकती है. और जो ये स्टेटमेंट है प्रे अवे दुआ करो चले जाए, दिस विल मेक अ वुमन फील हर इलनेस स्पिरिचुअल फेलियर. फिर ये मेरी जो मैं ड्रग्स यूज कर रही हूँ ये मेरी रूहानी कमजोरी है, ये अपने या मेरी रूहानी गलती है. नॉट एट ऑल. these are something if you change the way it is perceived, अगर आप अपनी ईमान के तौर पर अपना रिलीजन के बारे में अपना ये जो पर्सपेक्टिव है वो बदलें, it can make a lot of difference in the way that you should view yourself and you get better. A tradition rich in mercy and ready made for recovery. You can get better. आप तस्कियातुल नफ्स आप अपने बेहतरी कर सकते हैं, अपना नफ्स स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं. गो टुवर्ड्स दिस. तस्कियातुल नफ्स की एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, थेरेपी है, which a lot of psychologists practice if you look for them. तौबा आपने किया, of course repentance is the first way towards getting better. अल्लाह पाक बहुत रहम दिल है, अल्लाह पाक हर गुनाह माफ कर लेते हैं, तो आपने ये अपना परसेप्शन चेंज करना होता है. एब्सटिनेंस एज वर्शिप. आप इन चीजों से दूर रहें, आपके लिए और स्ट्रॉन्गर आपका रिकवरी होगा. मिलाती इल्मिया स्कॉलरली मॉडल्स. बहुत सारे मॉडल्स हैं इस्लाम से रिलेटेड और साइकोलॉजी से रिलेटेड जो आपको रिकवरी की तरफ लेकर जा सकते हैं. Like I said, there are three pillars of care that can help women: gender responsiveness, culturally rooted pillars of care, and faith integrated. जो ईमान से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड और जो आपके जेंडर से रिलेटेड हैं. Okay, so I'm just going to go towards a conclusion over here. My recommendation is we have real serious thoughts about these topics. We didn't show everyone that this topic or this issue is not a hidden issue. It is actually a visible and reality oriented one. और हमारे पास उम्मीद है. We are hopeful that there will be improvement in it. भी हम कम्युनिटी से मोबिलाइज कर सकते हैं, यूनाइट कर सकते हैं, खामोशी ब्रेक कर सकते हैं. मीडिया मेड सर्विसेज मोर जेंडर रिस्पॉन्सिव. औरतों की भी मदद करें, बच्चियों को भी मदद करें, लड़कों और मर्दों की भी as well. But we have to make sure every gender gets the treatment and the care that they need with confidentiality. कि उनके जो भी केसेस हैं उनको बहुत ही उन पर केयरफुली और स्पेसिफिक हैंडल किया जाए. Integrate faith woven tauba, mercy and community into evidence-based care. हम ईमान को थेरेपी के साथ कंबाइन करके ऐसे पॉलिसीज ऐसे सोल्यूशन निकालें जिससे बहुत ही बेहतरी हर ग्रुप के लिए हो, औरतों के लिए हो, मदर के लिए हो, बच्चियों के लिए हो, यूथ के लिए हो, हर इंडिविजुअल के लिए. So these are all of my resources that I refer to in my topic in my presentation, and I hope inshallah इसमें बहुत ज़्यादा सबके लिए आसानी और सब कुछ सीखा हो आज के presentation में. And we hopefully walk away with something that can help us a lot in the future. I hope ऐसे वाले efforts और future में भी किए जाएं और ऐसे topics हमारे लिए आगे future helpful रहे. So yeah, that's pretty much all from my end. And thank you so much for giving me this opportunity, ANFP, and I look forward to joining further courses like that. I do have a video, YouTube का एक लिंक है मेरे पास, मैं तो शेयर कर देती हूँ, आप जरूर देखिएगा ये वीडियो को, रिलेटेड टू ड्रग यूज इन वुमेन. एंड सब अपने फ्री टाइम में देखते जरा अपना पर्सपेक्टिव शेयर कीजिएगा. आई वुड अप्रिशिएट दैट. Thank you so much. Jazakallah khairun. And if you guys have any questions, I think you want to share any feedback, I would love to hear it. Allah Hafiz. Thank you.
If you have any questions, kindly share them out. I am available for any feedback, any questions, or comments.